Hello, friends. How are you all? I hope you all are fine. आप सबका मेरे चैनल नॉलेज सीकर्स पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आईसीएसई बोर्ड का रिड्यूस्ड सिलेबस लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं और अभी कब तक खुलेंगे इसकी भी कोई संभावना निकट भविष्य में नज़र नहीं आ रही है। तो इस वजह से सारे बोर्ड्स ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है ताकि बच्चों के ऊपर लोड बर्डन कुछ कम किया जा सके। तो इसी क्रम में आईसीएसई ने जो 10th स्टैंडर्ड के लिए अपना सिलेबस रिड्यूस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो सिलेबस मेरे पास है इस समय। तो आईसीएसई क्लास 10th का जो सिविक्स का रिड्यूस्ड सिलेबस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें तो सिविक्स का जो पहला सेक्शन है वो है द यूनियन लेजिस्लेचर, मीनिंग ऑफ द फेडरल सेटअप इन इंडिया, लोकसभा, टर्म, कंपोजिशन, qualifications for membership, parliamentary procedures, a brief idea of sessions, quorum, question hour, adjournment and non-confidence motion, speaker election. Second part इसका राज्यसभा, composition, qualifications for membership, election, term, presiding officer, power and functions of union parliament, control over executive exclusive powers of the two houses. सेकेंड सेक्शन है इसका द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, पावर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, discretionary and emergency. Prime Minister and Council of Ministers, appointment, formation of Council of Ministers, tenure, position and powers of the Prime Minister, collective and individual responsibility of members of the Cabinet, distinction between the Council of Ministers and the Cabinet. तीसरा सेक्शन है द ज्यूडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट, composition, qualifications of judges, appointment, jurisdiction and functions, original, appellate, advisory, revisory, judicial review and court of record, enforcement of fundamental rights and writs. The High Courts, composition, qualifications of judges, appointment, subordinate courts, distinction between court of the district judges and session court, लोक अदालत्स, मीनिंग एंड एडवांटेजेस। तो ये था आपका सिविक्स का रिड्यूस सिलेबस। अब मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस। हिस्ट्री का फर्स्ट सेक्शन है द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 to 1917, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957, only the causes, political, socio-religious, economic and military, will be tested. The events, however, need to be mentioned in order to maintain continuity and for a more comprehensive understanding. B. Factors leading to the growth of nationalism, socio-religious reform movements, brief, mention of contribution of Raja Ram Mohan Roy and Jyotiba Phule and role of the press. Foundation of the Indian National Congress, the Indian National Association Surendranath Banerjee and the East India Association Dadabhai Naoroji as precursors. Immediate objective of the Indian National Congress, the first two sessions and their presidents should be mentioned. In section C, first phase of Indian National Movement 1885 to 1907, objectives and methods of struggle of the early nationalists, any two contributions of Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee and Gopal Krishna Gokhale. Second phase of the Indian National Movement 1905 to 1916, brief mention of the causes of the partition of Bengal and its perspective by the nationalists, objectives and methods of struggle of the radicals, any two contributions of Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai, the Muslim League, objectives of the Muslim League.
हिस्ट्री का जो सेकेंड सेक्शन है वो है मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1915 टू 1947, जिसमें महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कॉजेस खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, program and suspension, Chauri Chaura incident and impact of the movement. The civil disobedience movement causes reaction to the Simon Commission, declaration of Purna Swaraj at the Lahore session of 1929, Dandi March, Gandhi-Irwin Pact, and the Second Round Table Conference. The Quit India movement causes failure of the Cripps mission, Japanese threat, Quit India resolution, and the significance of the movement. The next one is forward block objectives and INA objectives and contribution of Subhash Chandra Bose. Next one is independence and partition of India, the Mountbatten Plan, clauses and its acceptance, and the Indian Independence Act of 1947, clauses only. The third section of history is the contemporary world, जिसमें पहला है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, causes nationalism and imperialism, division of Europe and Sarajevo crisis, and results Treaty of Versailles. The Second World War causes dissatisfaction with the Treaty of Versailles, rise of fascism and Nazism, Japanese invasion of China, failure of League of Nations, and Hitler's invasion of Poland. Next one, United Nations, the objectives of the UN, the composition of the General Assembly, the Security Council, and the International Court of Justice. Major agencies of the United Nations such as UNICEF, WHO, and UNESCO, any 4 functions for each. And the last one is non-aligned movement. Brief meaning, Panchashil, names of the architects of NAM. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका रिड्यूस सिलेबस. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशंस. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड बाय.